Okay, keep reading. Self-inductance. Self-inductance. So self-inductance क्या है? You have to see. So you tell me, suppose मान लो, this one already you know. There is a magnetic field and there is a coil, right? When the magnetic field is increasing in this direction, see, I'm telling me which direction the current will be induced according to Lenz's law. The magnetic field is increasing in this direction. Anti-clockwise. Anti-clockwise direction. Very good. So clockwise, anti-clockwise लगाने का, so that it is it is opposing the cause producing it, right? That means we understood that a closed coil kept in an external field increasing with time will induce a current in the coil. करंट कॉइल का ये फैराडेज लॉ से सीखा है. ओके, नाउ सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हो रहा है देखो, हो गया. Okay, now self inductance में if the current carrying coil increasing with time, now I did not took any magnetic field, I took simply the current carrying coil I took. Okay, current is like this. This is the original current, right? Original current. Okay, here there is no magnetic field initially. Okay, I am passing a current. You tell me when I pass a current, magnetic field का direction किस तरफ होगा? Curl the fingers in the direction of current. Magnetic field direction will be, it is inverse. देखो, curl the fingers in the direction of current and inverse है. मान लो the current is increasing with time. So magnetic field inverse है ना? Then magnetic field also will increasing with time. Magnetic field also current increase करता जा रहा हूँ, magnetic field is increase होते जाएगा. Now again I apply Faraday's laws. When the magnetic field is increasing, there is one more current is produced, which is exactly opposite direction to that of the original current. So this is I induced current. I induced current. Okay, मतलब खुद ही करंट को, खुद ही सेम सर्क्यूट में दूसरा करंट को पैदा किया है. That is called self inductance. This principle को we call as self inductance. So definition क्या होगा इसका? Definition says the effect in which changing current in the circuit induces induced current in the same circuit is called as self inductance. Changing current in the circuit, करंट चेंज होते हैं तो दूसरा करंट भी आ रहा है इन द सेम सर्क्यूट में. दैट प्रिंसिपल को वी कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन. सो करंट प्रोड्यूस हो बोलते ईएमएफ भी रहेगा. सो वी आर इंटेंशन और इंटेंशन इज टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ कितना होगा. द करंट इंड्यूस्ड करंट कैन बी ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन. इट कैन बी एनी डायरेक्शन. दैट्स व्हाई हम लोग क्या कैसे लिखेंगे? वी विल राइट लाइक दिस. I net current is I original current plus or minus I induced current. I original current plus or minus I induced current. अगर magnetic field decrease होता गया तो opposite direction में act होगा. So it is in the same direction. Okay. Then now इसका direction देखेंगे. Direction of self-induced EMF is which direction? Self-induced. Okay. So now self-induced EMF का direction देखेंगे. Direction of self-induced EMF for current. मान लो there is a coil and current is increasing in this direction. Now current is increasing means which direction? Self-induced current will be in which direction? Current is increasing in this direction. So definitely opposition current should be the right. In this opposite direction में
तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी लाइक दिस. सो इसमें बैटरी लगा रहा हूं, प्लस माइनस. वाई प्लस? बिकॉज इधर से ओनली करंट इंड्यूस विल बी शुड कम. आई इंड्यूस करंट विल बी. एंड इसका ईएमएफ इजी. बाद में देखेंगे ईएमएफ कितना होगा सेल्फ इंडक्शन में. मतलब एक कॉइल में करंट इंक्रीज करते तो ऑटोमेटिक दूसरा करंट भी आ रहा है इनडायरेक्टली इन द सेम सर्किट में, उसके पास ईएमएफ भी होगा, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में. सपोज मान लो इन द कॉइल में जस्ट बैटरी पुट करना आने का, करंट इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. तो विच डायरेक्शन विल बी द ईएमएफ टर्मिनल इन दिस डायरेक्शन? मतलब सो फर्स्ट नेगेटिव टर्मिनल आएगा, बाद में पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, प्लस माइनस, दिस ईएमएफ. ओके. सो आपको इनडायरेक्टली क्या है नोट बोल के लिख सकते हैं, इंड्यूस करंट अपोजेस, induces current opposes growing current and supports dying current. We already know opposes the growing current को oppose करेगा, dying current को supports करेगा. Okay, now we will see coefficient of self inductance and self induced EMF is how much self induced में. मैं I took a solenoid में I am passing the current, zoom बोल के बैटरी लगा के करंट को पास करूंगा. I can tell more the current, more the flux lines. True or false? More the current, more the flux lines. Or I can tell magnetic flux is proportional to current. Right? More the flux lines means nothing but more the current is there. When I remove proportionality, we'll get a constant phi B is equal to Li. This is a constant. And L is called as coefficient of self-inductance. Coefficient of self-inductance, very important. आपको दे विल एग्जाम में दे विल आस्क फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. आपको क्या करने का, सिंपली फ्लक्स फाइंड करो, खत्म. फ्लक्स फाइंड करो. वी नो ऑलरेडी फैराडेस लॉ से फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा बोल के. वो फ्लक्स फाइंड करके आई को कॉर्नर पे को कंपेयर विद दिस इक्वेशन विल गेट सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, फ्लक्स फाइंड करके ओनली सॉल्व कर देंगे. So this is the self inductance. Now tell me, this coefficient of self inductance depends on phi and I. Right or wrong? L depends on phi and I, right? Bolo, yes or no? Okay. So L is a constant. It does not depend on phi and I. Like I told you many times, R is equal to V by I. R does not depend on V and I. Even though formula mein hai, but it does not depend on V and I. Why? If I double the voltage, the current also will double. So the two to get cancelled, R will be same. R depends on rho L by A. That one. Same thing here also. If I more the flux more the current, cancel हो जाएगा. So flux it does not depend on flux and I. It depends on लिखो. It depends on L depends on shape, size, geometry of coils and medium. Shape, size, geometry of coils and medium पर depend होगा. तो सेल्फ इंडक्टेंस का आ गया. नाउ ईएमएफ फाइंड करेंगे. ईएमएफ तो फैराडेस लॉ ओनली, पूरा चैप्टर पूरा फैराडेस लॉ राइट. सो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? E is equal to mod d phi by dt, because flux we know, right, by dt. So E is equal to mod d by dt of flux is Li. Okay, L is constant, बाहर आ जाएगा. L mod di by dt, very important, very important. EMF induced is L mod di by dt. This is a self-induced EMF. Self-induced EMF. So mod E is equal to L mod di by dt. Di means change in current by change in time. Self-induced EMF का formula is L. And इसका SI units. SI units of L. L is Henry. SI units is Henry.
सो फॉर्मूला आ गया ना, फाई इज इक्वल टू एल आई, ई इज इक्वल टू एल मॉड डी आई बाई डी टी इज अ फॉर्मूला. ओके, हियर यू टू अंडरस्टैंड, सिंपल है. आपको रेसिस्टेंस में सपोज मान लो, आई गिव रेसिस्टेंस में मान लो द करंट आई इज फ्लोइंग. व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर? व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर? with the current and in terms of current and resistance I want V equal to voltage across resistor is how much? IR. IR. Okay. Same thing if the inductance may current is flowing, inductance L, current is flowing, then tell me what is the EMF induced across the inductor? EMF will induced across the inductor is IL. नो IL नहीं है. देखो ये वाला L DI by dt. सो वोल्टेज V इक्वल IR कितना फेमस है, ये भी उतना ही फेमस डालने का. सो E इज इक्वल टू L मॉड डी बाई टी. नाउ रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस का क्या फर्क है देखो समझो. आई कैन राइट लाइक दिस, R इज इक्वल टू मान लो डेल्टा V बाई आई, इतना मालूम है, V इक्वल IR, R इक्वल डेल्टा V बाई आई. दैट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या है, I है ना. सो रेसिस्टेंस किसको अपोज करेगा? रेसिस्टेंस अपोजेस व्हाट, किसको अपोजेस करेगा? डिनोमिनेटर पे जो भी है करंट है ना, करंट को अपोज करेगा. सो रेसिस्टेंस अपोजेस चेंज इन करंट. ओके, सिमिलरली इंडक्टेंस का E इज इक्वल टू L मॉड डी बाई dt, राइट? तो फ्रॉम दिस इंडक्टेंस का इज इक्वल टू EMF अपॉन मॉड डी बाई dt. Now inductance opposes what? Inductance opposes the change in current. Very important. Inductance opposes change in current. So there is a difference between resistance and inductance. Resistance opposes the current only. ये change in current को oppose करेगा. They will ask some theoretical questions. Bulb देगा, coil रखेगा, inductance रखेगा. When you off the switch battery से switch off करेगा. Off करने से एक ही बार जीरो नहीं होगा bulb. Because inductance opposes the change in current. Suppose 10 ampere flow कर रहा है, उसमें when I off the switch 10 9 8 7 धीरे धीरे होगा. Inductance coil लगाए तो, so brightness will धीरे धीरे reduce and it becomes zero. Inductance का, inductance always opposes the change in current. Resistance opposes the current only, opposes the current. Changing current नहीं है, opposes current. Okay, resistance opposes current, inductance opposes the change in current. Very important. चलो, नाउ टू फॉर्मुलास आ गया. क्या फॉर्मुला था? फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई. एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. एंड सेकंड फॉर्मुला ईएमएफ इज इक्वल टू एल मॉड डी आई बाई डी टी. व्हाट इज डी आई? इज नथिंग बट चेंज इन करंट बाय चेंज इन टाइम. ओके, समझ में आ रहा? चलो, नाउ क्वेश्चंस करेंगे इन दिस मॉडल्स में. अनुष्ठ श्रीराम, ये दो फॉर्मुला आ गया ना? यस, ये दोनों फॉर्मुला शीट में डाल दिया. ओके, चलो न्यूमेरिकल्स करें. हाँ लिखो. What is the coefficient of self inductance of the coil? मतलब L equal to question mark. Magnetic flux the given. Magnetic flux is 40 milliwebers. Milli is 10 power of minus 3. Flux का units are webers. Is produced when I is equal to 2 ampere flowing through it. So inductance. तीनों का रिलेशनशिप मालूम है ना आपको, यूज करो. Two into 10 power minus 2 Weber per ampere. वेबर पर एम्पियर. ऐसा नहीं है, यूनिट्स क्या होगा, क्या बोलते उसको, हेनरी. पापा वो डिस्कवर किया, उसका नाम ही डालने का. ओके, एल इज इंडक्टर्स. सो फाइव बी इज इक्वल टू एल आई यूज करो, खत्म. सो एल इज इक्वल 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 2 हेनरी. आंसर आया?
दैट फॉर्मूला ओनली 5b बाई आई किया तो एल आ जाएगा. नेक्स्ट. A coil has a inductance of 4 millihenry. Inductance means L. L is equal to 4 milli is 10 power of minus 3 Henry. If the current through changes from this much to this much, current is changing in this time interval. He's telling average EMF induced across the inductor. So we know the formula. EMF ka formula across the inductor is L mod di by dt. Di is the change in current. Time is the change in time. Kitna time? 0.5. Lago and find the EMF. All values, substitute. One 1.4 into 10 power minus 2. 14 millivolts you can write. EMF is volts. 14 millivolts आएगा. DI means 2 minus 4 into 10 power of minus 3 into 2 minus 0.5, 1.75 by change in time is 0.5. If we solve, we'll get this 14 millivolts. Chalo. Next. A coil has a self-inductance of 10 millihenry. Self-inductance is 10 millihenry, 10 into 10 power minus 3 Henry. What is the maximum magnitude of the EMF in the coil when the current this much is flowing is sent through it? Maximum E max चाहिए is how much? Maximum EMF induced is how much? When current they given as 0.1 sin 200t. तो EMF का फॉर्मूला एक ही मालूम है आपको इंडक्टेंस में, खत्म, वो यूज करो. E इज इक्वल टू L mod di by dt. तो मतलब डिफरेंशिएट करने का L is 10 power of 10 into 10 power minus 3 is 10 power minus 2. डिफरेंशिएशन कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मींस 0.1 बाहर आ जाएगा. साइन का डिफरेंशिएशन इज cos 200t into अगेन चेन रूल 200t का डिफरेंशिएशन इज 200. तो कितना होगा? ये 100 कैंसिल हो जाएगा एंड 0.2 cos 200t, right? This is a EMF but not maximum EMF. A maximum EMF means E maximum means ये एक्सप्रेशन कब मैक्सिमम होगा? cos का मैक्सिमम वैल्यू हाउ मच? 1. दैट मींस इसको निकाल के 1 डालो, सो आंसर इज E maximum is 0.2 volts. है? चलो. Now we will calculate inductance of a solenoid. एक solenoid is there, उसका inductance I want to calculate. Ideal solenoid. Okay, this is a solenoid of total length L. Okay, area of one coil is area A, and total number of turns is N. And you know, remember small n is nothing but number of turns per unit length. Number of turns per unit length, right? Okay, very important. L, small l again. Number of turns per unit length. Okay. Now I want to calculate what? Inductance of a solenoid. Inductance means what we have to find? L we have to find. Capital L we have to find. Inductance of a solenoid is capital L we have to find. Okay. You remember this formula? When a current carrying coil in a solenoid may, inside there is a uniform magnetic field. Magnetic field is how much? Magnetic field inside a ideal solenoid. Formula है? N mu naught I. थोड़ा अच्छे से बोलते mu naught Ni. Mu naught Ni is a formula. We studied straight wire, circular wire, solenoid, toroid. उसमें solenoid का moving charges बहुत important है. देखो connectivity रहेगा. Mu naught Ni. This is a magnetic field, you know. Mu naught Ni. N is a here small n है. Number of turns per unit length है. आपको एग्जाम में चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कैपिटल एन दिया है और स्मॉल एन दिया है, वी हैव टू कन्वर्ट. ओके, नाउ आवर इंटेंशन इज टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस. आई टोल्ड यू मेथड.
व्हाट वी हैव टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, वी हैव टू फाइंड व्हाट, फ्लक्स फाइंड करने का, सिंपली फ्लक्स फाइंड करके वी हैव टू कंपेयर द, ओके। सो फ्लक्स वी ऑलरेडी नो फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स, फ्लक्स का फॉर्मूला है बी, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो सेम डायरेक्शन बी ए, ओके। इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर, एक कॉइल का रेडियस इज कैपिटल आर, हाँ। सो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज हाउ मच, बी ए, ओके। बट दिस फॉर वन कॉइल, अगर एन टर्न्स के लिए फ्लक्स कितना होगा, एन बी ए, टोटल फ्लक्स, इज टोटल फ्लक्स, ओके। नाउ बी के जगह में लगाओ फॉर्मूला, फ्लक्स बी इज इक्वल टू एन इंटू म्यू नॉट एन आई, and what is the area of the coil is circular, right? So pi r square. So I'm trying to convert capital N to small n, so capital N is equal to n into small l, so phi b is equal to n into small l times mu naught ni pi r square. So phi b is equal to mu naught n square pi r square l, i को कॉर्नर पे दूंगा, i फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ आई में आ जाएगा. नाउ वी नो द फार्मूला, फेमस फार्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, वी लर्न द फार्मूला, राइट? सो कंपैरिजन देखो, आई के जगह में आई है, एल के जगह में क्या है, दिस वन. देयरफॉर इंडक्टेंस ऑफ ए आइडियल सॉलिनॉइड इज म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इज आंसर. म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल. Sometimes what is pi r square is area, area into length is nothing but volume. Sometimes L is equal to mu naught n square times of volume is also same only. Area into length is nothing but volume. Area of a circle into total length, nothing but volume. चलो फॉर्मूला बैठ करो, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल. बोलो श्रीराम. आइडियल सॉलिनॉइड में इंडक्टेंस कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल. बोलो म्यू नॉट n square pi r square. square L. Pi r area into length is nothing but volume, right? So V naught n square pi r square, where n is what, small n, number of turns per unit length. Okay. चलो. The current in the solenoid of 200 turns over length of centimeters. What is that, capital na small n? 200 turns are given in the ideal solenoid. Turns means total number of turns is always capital N. Turns per unit length is nothing but small n. Okay. So total number of turns is 200 they given. Over the length they given as length is equal to 20 centimeters, 20 into 10 power of minus 2 meters. Okay. And radius of the coil they given as 1 by 2 pi centimeters, 10 power of minus 2 meters. Changes at a rate of देखो 0.2 ampere per second, मतलब di by dt changes at a rate of current को 0.2 ampere दिया है per second. Okay. The EMF induced is how much? We know the formula, एक ही formula EMF induced का. हम लोग इंडक्टेंस में सॉलिनॉइड में क्या सीखा है, E is equal to L mod di by dt. देखो di by dt तो दे दिया, L we have to find for a solenoid. We know the formula, use करो formula, substitute neatly and tell the answer. L is equal to what is the formula, mu naught n square pi r square L. That value you have to substitute and di by dt already given, multiply, you will get volts. Here small n is what? Small n is capital number of turns per unit length. So 200 into ये 10 power minus 2 ऊपर गया तो 10 square मतलब 100 by 20. So 0 0 2 10 ja. So it is 1000 turns. 1000 turns per unit. Small n भी आ गया. Substitute now.
I'm getting 4 into 10 power minus 2 into pi to the power 4. 5 power 4 Pi power 4. pi all will get cancel, pi पूरा cancel हो जाएगा सब कुछ. Well, then it's 4 into 10 power minus 2. So answer will be, final answer if you substitute here, L value d/dt से मल्टीप्लाई किया तो 4 into 10 power of -7 आएगा, -7 volts. चेक कर लो. Okay. So mu naught value is how much? Mu naught value is 10 power minus 7 into 4 pi because 4.10 power of -7. So L is equal to 4 pi into 10 power of -7 into number of turns is 1000 into 1000, number of turns per unit length, into pi into r square. R square means 1 by 2 pi, 10 power of -2 by 2 pi into 10 power of -2 pi, 2 by 2 pi. R square है ना, into L. L is again into 2 into 10 power of -1 meters. Okay. Now calculate karo and substitute. We'll get the value in this as this much, 4 into 10 power of -1. Calculate karo pura. Okay. Next. Self-inductance ka we done. Now, inductor in electrical circuits. Inductor in electrical circuits. I told you how to put the symbol of EMF induced in a inductor, self-induced EMF का. Okay. वो circuits में बहुत काम आने वाला है. वो circuits में कैसा use होगा, we'll see. Okay. Inductor in electrical circuits. Suppose मान लो I told you ये लगाना सीखने का, right? This is a coil. I told you here current is increasing. Tell me EMF का किस तरफ होगा? EMF induced, self-induced EMF का माइनस किस तरफ होगा, प्लस किस तरफ होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा ना, मतलब दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, प्लस माइनस. EMF विल बी इज, ये फॉर्मूला क्या होगा, L mod d/dt. ये यूज करके विल डू द क्वेश्चंस नो. ये आपको सर्क्यूट्स R में L में कंबाइन करके दे देगा समटाइम्स. ओके. तो आपको ये लगा के लगाना पड़ेगा. ओके. चलो. द गिवन L एक कॉइल है, एक कॉइल दिया है. ओके. L value they given this much. A current is decreasing at a rate of this much. So current मान लो it is decreasing like this. I is decreasing in this direction. Okay. L value is given. Find the magnitude of self-inductance, self-induced EMF. E value is asking. E value. So that formula use कर सकते हो. Because I told you when the current is changing, definitely EMF will be induced. With in this में किस direction होगा? उसी direction में support करने का, right? So this will be plus minus, right? हाँ, EMF induced का फॉर्मूला लगो, L mod di/dt. तो कितना होगा, दैट फॉर्मूला का 3 into 10 power minus 2. हाँ, so 3 into 10 to the power of -2 volts. Right? E is equal to L mod di/dt. We substitute, we'll get the answer. 3 to the power -2 volts. Okay. now देखो आया. और देखो रेसिस्टेंस एंड वन बैटरी इज गिवन. रेसिस्टेंस का कितना है, 2 ohms दिया है. करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस and E is the given as 24 volts, 24 volts, and L is 4 Henry the given. Inductance is 4 Henry. Current is decreasing in this direction. Current is decreasing at a rate of this much. He is asking potential difference between Vn minus Vm. Potential difference चाहिए. So हम लोग क्या करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स में, पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए we'll use the Kirchhoff laws. देखो इस पाथ में स्ट्रेट लाइन का पाथ वी लर्न, राइट? स्ट्रेट लाइन का पाथ कैसे करेंगे बोल के. एंड रिमेंबर व्हेन द करंट एंड पाथ आर इन द सेम डायरेक्शन, रेजिस्टेंस में इट इज -IR, ऑपोजिट डायरेक्शन +IR. फॉर बैटरी के लिए व्हेन यू गो फ्रॉम माइनस टू प्लस, इट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इज प्लस आएगा, राइट? उल्टा गया तो माइनस आएगा. तो देखेंगे, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई एम कमिंग बैक टू हियर. इन दैट में आई वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन N एंड M. सो इधर से स्टार्ट करो. Vm ए पॉइंट पोटेंशियल है. Vm देखो करंट एंड पाथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो इट इज -IR, I into R. लास्ट में सब सुनेंगे. बाद में -2 प्लस यू आर गोइंग, सो इट इज इंक्रीजिंग, राइट? प्लस E. देन
You tell me first of all, इसका battery लगो. The current is decreasing in this direction. So which direction we have to put the battery? First will be negative terminal or positive terminal? First one. Negative. First negative. This is positive, right? Self-induced because ये उसी direction में support करने तो current is like this, right? EMF E. Now देखो -2 plus E is equal to sum of the voltages is equal to the point potential Vn. Okay. Now Vn minus Vn, ये M को उधर फेंक दो. So Vn minus Vm is equal to minus I दिया है 10, right? So minus 10 into R is how much they given? 2 ohms. Plus voltage is 24 volts. And E find करो. E का फॉर्मूला मालूम है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का, L mod dI by dt. L is 4 into dI by dt, the given as 0.5. That is 2 volts. So it is plus 2 volts. So minus 20 plus 24 is कितना? 4 plus 2 6. So आपको ये बैटरी लगाना नहीं आए तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर्स. वो ऑप्शन में रहेगा कंपलसरी. जो रॉन्ग आंसर आल्सो विल स्टे इन द ऑप्शन. दैट मच स्पेशल पर्सनस आर देयर. ओके, कर सकते हैं ना? करो इस सर्किट में, क्लोज सर्किट में आराम से किरचॉफ लॉ लगा सकते हो. करंट इन दिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. व्हेन यू ऑन द स्विच प्लस माइनस करंट इज फ्लोइंग and current is increasing or decreasing, which is increasing at a rate. Current is increasing. First inductor को replace करो self induced EMF से, then only you can do anything. So current is increasing in this direction. So क्या करेगा? Opposite direction में current आने का. Opposite direction means this is plus, this is minus. EMF EC. He's asking what? Find the self inductance. L value is asking. L equal to question mark. तो आपको सिंपली क्या करेंगे? यू टेक द पाथ क्लोज सर्क्यूट. यू नो केवीएल, राइट? केवीएल क्या है? सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज सर्क्यूट इज इक्वल टू 0. बट केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट एंड इक्वल टू 0 करो, विल गेट द आंसर. एल वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. -2 प्लस यू आर गोइंग 6 पॉजिटिव, जा रहे अगेन प्लस टू माइनस यू आर गोइंग. सो माइनस ई के जगह में आई कैन सब्स्टिट्यूट L mod dI by dt माइनस L mod dI by dt. बाद में path and current are in the same direction, minus IR equal to 0, right? L चाहिए, everything is given. 6 minus L dI by dt is 10 cube minus I is how much? 1.5 into R is 2 ohms. So minus 3 है. 3 is equal to L into 10 power of cube. L is equal to 3 into 10 power of minus 3 Henry. 3 into 10 power of minus 3 Henry. समझ? सो लाइक दिस. हो आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, खुद ही सर्क्यूट, खुद ही करंट को सेम सर्क्यूट में करंट इंड्यूस होने वाला प्रिंसिपल को वी कॉल अ सेल्फ इंडक्शन. उसको ईएमएफ रिप्लेस करना आ गया तो यू कैन कंबाइन आरएल सर्क्यूट्स में, यू कैन कंबाइन इजीली सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑलरेडी यू नो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा? One coil is there, it is connected with the AC circuits, any battery or something. Okay, EMF. Okay, and there is a galvanometer to show there is any current is not there or not. When you on the switch, what is happening? When you on the switch, current इसमें दिखा रहा है, ये दोनों अटैच नहीं है, दूर दूर में है थोड़ा. If you on the switch, it is showing deflection. Galvanometer is showing deflection. Current, मतलब current is passing in this circuit. And after certain time के बाद again coming back to 0 position. Okay, next observation क्या है? When you off the switch, they observed the galvanometer showing deflection in the opposite direction and again coming back to the same 0 direction. Why it is happening? You don't understand. That is all right. I told you starting में Faraday's laws.
whenever you on the switch, the current is increasing, the magnetic field lines are increasing. Whenever the flux links with that, cuts the conductor, the EMF will be induced, and if it is a closed circuit, current is produced. That's why current is getting produced. This phenomenon we call as mutual inductance. There is no physical contact. Change in one circuit in one current will induce a current in the other coil. That phenomenon we call mutual inductance. Definition likho. It is a phenomenon of production of EMF in one coil due to change in the current in the neighboring coil. म्यूचुअल इंडक्टेंस में टू कॉइल्स कंपलसरी, दो कॉइल्स कंपलसरी. फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज करूंगा, सेकंड कॉइल में इंड्यूस हो रहा है करंट. म्यूचुअल इंडक्टेंस. इसका भी वी आर ट्राइंग टू फाइंड ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, फॉर्मूला क्या है वगैरह. ना इसका ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे. हो गया, चलो. Now, coefficient of self-inductance and mutual inductance. Coefficient of self-inductance and mutual inductance. मान लो these are two coils are there. इसमें I am passing a current I1. Okay, or I can change the symbol. Easy one. I1, I1, I1 current. Okay, I1 current के वजह से change हो रहे तो the flux lines will change, the magnetic field lines, the flux lines will change, and the flux will be cutting the secondary conductor. Therefore, current is induced in the coil, right? Coil 2. एक coil 1 है, coil 2 है. So इसमें current will be induced, right? Changing current in the one circuit will induce a current in the other circuit. Now इसमें आपको coefficient of mutual inductance कितना है? Like same way. You tell me, more the current, more the flux in the secondary coil or not? Or I can tell flux linked in the secondary coil is proportional to flux current in the primary coil, first coil. ये important, 2 and 1 वाला important है आपको. When I remove proportionality, we'll get a constant phi 2 is equal to m times of I1. This m is called as coefficient of mutual inductance. Coefficient of mutual inductance, and this also does not depend on flux and I. It is depending on shape, size, geometry वगैरह आएगा. And SI units of m is same Henry. This is a coefficient of mutual inductance. इधर भी ऐसे ही. Whenever they tell to find coefficient of mutual inductance, आपको क्या करने का, फ्लक्स फाइंड करो, एंड I1 को कॉर्नर पे दो, जो भी कंपैरिजन फॉर्मूला से m आ जाएगा, दैट इज द m वैल्यू. ओके. सी m फाइंड करने का अंडरस्टैंड करो. आइदर यू पास ए करंट इन द फर्स्ट कॉइल, फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, एंड देन इक्वेट आ जाएगा. और देखो टू कॉइल्स आर देयर, फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल. मैं सेकंड कॉइल को करंट पास करूंगा, I2 पास करूंगा. फ्लक्स इन I1, flux in the first coil, I will try to find. But here also, the flux is proportional to current I2. And when I remove proportionality constant, phi 1 is m times of I2. In both cases, में m is same. In both cases, में m is same. So, m is same in both cases. So, आपको जो भी फॉर्मूला आता है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू पास द करंट इन द कॉइल. दो कॉइल देगा, यू हैव टू पास द करंट एंड ट्राई टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके. नाउ हियर ईएमएफ पूछेगा. ईएमएफ कैसे फाइंड करेगा? फैराडेस लॉस. ईएमएफ इंड्यूस इन द व्हिच वन? सेकेंडरी कॉइल.
mod is equal to mod d phi 2 by dt, right? सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल. नाउ phi 2 कितना आया? d by dt of m i1. सो m बाहर आ जाएगा, di1 by dt. So this is the formula. E2 secondary coil का EMF is m times of mod change in current in the first coil. This is the EMF का formula. E2 is equal to m times of di1 by dt. This is the formula. And di is change in current by change in time वाला. तो formula बैठ करो. Flux phi 2 is equal to m times of I1 और secondary coil का EMF is m times of di1 by dt. तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन साथ साथ पढ़ने का मतलब यू हैव टू बाय हार्ट बोथ फॉर्मूलास टू गेट दिस चैप्टर परफेक्ट. ओके, पीवाईक्यूज तो 2 घंटे बैठे तो पूरा 23 इयर्स क्वेश्चंस कराऊंगा, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा. बट आपको फॉर्मुलास अच्छे तरह ग्रिप होने का एंड वे ऑफ डूइंग फैराडेस लॉस वाले कुछ नहीं इसमें. इजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द इजीएस्ट चैप्टर. आपको आराम से लेस नंबर ऑफ फॉर्मुलास आर देयर. पीपल क्या सोचेगा उसमें फील नहीं आएगा, अरे ये छोड़ देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेपरेट चैप्टर है छोड़ देगा, ऐसा नहीं है. 2 चैप्टर्स पढ़ो, मूविंग चार्जेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों कंबाइनिंग इफेक्ट में इजी हो जाएगा आपको. ओके चलो फॉर्मुला आ गया ना. E2 is m times of di1 by dt. di is nothing but change in current by change in time. ओके करो. EMF of 0.5 volts is developed in the secondary coil. EMF is induced in the secondary coil. मतलब E2 is given 0.5 volts. When the current in the primary coil changes from this much to this one in this much time, में calculate the mutual inductance. M is the link to find. So EMF is given, right? Changing current is also given. So EMF का formula क्या था? M times of mod di1 by dt. Change in current by change in time, and find M. Zero point zero five. Yes, 0.05 units are Henry. Henry. Yes, M is Henry. Di is already 2 minus 3 5 is 3 minus of plus हो जाएगा by dt is 300 milliseconds 10 to the power minus 3 into m. That is EMF कितना था? 0.5. Then 300 10 to the power of m by 10 to the power of minus 1. So it is 10m. So if you cancel, you'll get 0.05 Henry. Yeah, sure. Okay. Okay. You have to understand before doing this one. You have to understand एक formula पूछूंगा. Circular current carrying coil का वजह से moving charges में straight wire current circular coil center में I want magnetic field. Center में magnetic field in एक circular current carrying coil. Circular बहुत easy था. हाँ ऑन किया फिर साफ कर रहे हैं. ओके उसमें सर्किल का यूज करके सेमी सर्किल भी डन, क्वाड्रेंट भी डन, जनरल आर्क भी डन. ऑल आर सेम फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2 इंटू सर्किल का रेडियस इज ए. I by A. Or IA. I by A. म्यू नॉट बाई 2 इंटू I by A. नाउ सर्किल करंट कैरिंग कॉइल के वजह से सेंटर में यू गॉट द फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2 इंटू I by A.
क्वाड्रेंट का कितना होगा? म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए इंटू 1/4. सेमी सर्किल मीन्स म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए इंटू 1/2. दिस इज 1. ओके, देखो आपको फाइंड करेंगे. देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल्स आर कंपल्सरी. ए स्क्वेयर कॉइल ऑफ साइड L is placed at the center of the circular coil of radius r. ये सर्किल है, सर्किल का रेडियस r है, एक स्क्वेयर कॉइल लगाया सेंटर में, सो दैट बोथ सेंटर का स्क्वेयर का एंड सर्किल का कोइंसाइड हुआ, एंड लेंथ इज L. लेंथ इज L. Find the mutual inductance between the circular loop and the square coil. M we is telling to find mutual inductance कितना है. ओके, नाउ हम लोग करंट किस में पास कर, सी म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए व्हाट आई टोल्ड टू फाइंड फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा. ओके, सो किस में करंट पास करेंगे? फर्स्ट कॉइल में पास करके मैग्नेटिक फील्ड इजिया, और सेकंड कॉइल में पास करके मैग्नेटिक फील्ड इजिया. व्हिच वन इज बेटर टू फाइंड? First coil. हाँ, correct. बिकॉज ये साइज इज वेरी वेरी लेस, राइट? सो इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, देखो करंट आई एम पासिंग लाइक दिस, I1 current is passing. Now that is easy for us. Magnetic field, current carrying coil, curl the fingers in the direction of current, and magnetic field will be inside. And we know the magnetic field also. So कितना था? B is equal to mu naught by 2 into I is I1 by radius is R. A is R. This is a magnetic field, right, inside. Okay. Now mutual inductance आने के लिए flux find करो, खत्म हो जाएगा. Flux find करो. So flux in secondary coil is, initially I told you, magnetic field area vector in the same direction, so BA. and area किसका डालेगा? टेल में area you will for square circle का, which area we have to find flux के लिए? Where? Square, because flux is passing through that area only I want, right? So कितना होगा? B का फॉर्मूला में mu naught by 2 into I1 by R times area is L square. So I1 को कॉर्नर पे दो, pi 2 is equal to mu naught L square by 2R times I1. And we know the formula, right? Phi 2 is equal to M times of I1. So comparison में M आ जाएगा. M is equal to mu naught L square by 2R. सिंपल. म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस का वही काम है. फ्लक्स फाइंड करो, फ्लक्स से आई को कॉर्नर फेंक दो, जो भी कंपैरिजन में आ जाएगा. ओके, तो एक क्वेश्चन करो सेम मॉडल में. करो सेम मॉडल. इंस्टेड ऑफ स्क्वायर आई गिवन सर्कुलर. दोनों कॉइल सर्कुलर है, रेडियस ए है एंड कैपिटल बी है. इज टेलिंग टू फाइंड एम वैल्यू. Mu naught A square by 2B. थोड़ा भूल गया, मिनट के बाजू में दूसरा भी है. देखो इसमें करंट पास करूंगा I1. हाँ, नो टेल में मैग्नेटिक फील्ड तो मालूम है आपको. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट बाई 2 इंटू I1 बाई एरिया इज B, राइट? फ्लक्स कितना है? फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, इनिशियली द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया इन द सेम डायरेक्शन BA. B के जगह में म्यू नॉट बाई 2 इंटू I1 बाई B. एरिया कितना है? एरिया ऑफ सर्किल इज हाउ मच? एरिया ऑफ स्मॉल और पाई बोल गया, पाई A स्क्वायर. नो I1 को कॉर्नर फेंक दो, म्यू नॉट बाई 2 इंटू पाई A स्क्वायर बाई B टाइम्स I1. नो कंपैरिजन में पाई 2 इज M टाइम्स ऑफ I1. देयरफॉर M इज इक्वल टू, कंपैरिजन में कितना है? म्यू नॉट बाई 2 इंटू पाई A स्क्वायर बाई B इज आंसर. पाई भूल गया. ओके, बाय दिस आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये थोड़ा बाकी है. और कौन सा है? वी लेफ्ट विथ सम मोर क्वेश्चंस करके. सोलेनॉइड का भी रहेगा. क्यू यू नो 2 सोलेनॉइड्स विल बी देयर कोएक्सियली प्लेस्ड. उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है फाइंड करेंगे. एंड एसी जनरेटर लेफ्ट एंड एलआर सर्किट लेफ्ट. सो नेक्स्ट क्लास में डन. नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारा. एंड देन विल गो फॉर सम अदर चैप्टर.